Hello and welcome to Inside Naturo, a podcast where we'll bring you closer to the innovations, values, and vision of Naturo Industries. I'm Nikhil, and today we are diving into the story of Naturo Industries, how we began, where we are today, and where we are headed as a leader in the plywood and related goods industry. Joining me here is Vikram Mundhra, the managing director of Naturo Industries. Welcome, Vikramji. Thank you for having us. Hello. So let's start with a very simple question. So let's start with the history of Naturo Industries. I want to know how the company began and आज के क्या and उस टाइम के क्या visions थे behind the creation of Naturo Industries as a game changer for the plywood market. आपने तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है अराउंड you are asking a story of about it's 2024 1996 about 8 year story. Right, 1996 में start हुआ है. Yes, this began at 1996 and you can say it is more beyond that. I joined the business in 1997, I think, with this industry, and Papa was putting up the factory in Sonipat, and while the factory was just constructing at that time, I used to visit with him, and then later after a year I got graduated and then I joined in 1998, but I was involved in 1997 only. And the story begins way back from that period, about 5 years back from that period. Earlier, we used to stay in Bihar and we used to buy all the factories we have. Actually, we are not a plywood man. We started our business in some other field. My dad used to was the first one to introduce tractor in northeast Bihar. Earlier, people used to do agriculture with the kettle, but my dad introduced tractor, and we came from the automobile tractor industry, and then we had a showroom. Like today, you have a showroom in Delhi of cars and like that. So we shifted. So about 30 years back, we had a showroom in Bihar, and which was a very respected showroom over there. And then it went on like that. People used to come to our shop and ask for money. Please finance us. We are Wood Industries. We sell product in Delhi. We sell product in rest of India. And there was a massive revolution because Assam was banned by the government, and all the Assam demand was shifted to Bihar and Bengal definitely, but there was a huge mass of volume which was outbreak in Bihar. So at that time, the city market, Delhi, southern market of India was not connected with Bihar, and people were scared of giving credits, and they were scared of the Delhi and other cities issues. So they always ask us to please help us, and all the small factory were in the need of money. So we started doing financing them, and we in this way the journey of the plywood started, and we act as a sole buyer of those industry in Bihar, and we shifted to Delhi, and they used to sell us the truck, and we used to distribute it all over India because the demand was huge. I told you, because of Assam. And in this way, we shifted to our business and make another wing of plywood, and we shifted in Delhi, and we used to buy product, and our Bihar office used to handle all their needs, their payments, their purchases, and everything. We used to finance them, and in this way, we started selling about more than 100 trucks a month from Bihar, from different factories, and my father was solely looking after its sales. So after that, बिकॉज हमारी जो बनावट है मेरे डैड की या हम लोगों की, एक शुरू से ही मार्केट की तरफ हमारा इंक्लाइन ज़्यादा रहता है. वी आर वेरी क्लोज टू मार्केट. वी ऑलवेज वांट कि बाज़ार को कुछ अच्छा मिले, अच्छी प्राइस में मिले, बट प्राइस इज नेवर अ बैरियर फॉर अस. प्राइस इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज मार्केट इज ऑलवेज रेडी टू पे अ प्राइस ऑफ अ गुड प्रोडक्ट. तो वी ऑलवेज ट्राई टू डू, बिकॉज बिहार का प्लाई थोड़ा क्वालिटी में इंफीरियर था देन आसाम का प्लाई, एंड इट वाज ऑलवेज बी टोल्ड लाइक अ चीपर प्रोडक्ट, अल्टरनेट.
which we were never comfortable with that. There was always a demand, and we always, my dad always thought कि भाई brand value होनी चाहिए, हमारी खुद की, मेरे father का नाम या हमारा नाम, it should be in the brand, or brand means a quality, not a brand, it's a quality name. तो क्योंकि जब एंड कंज्यूमर को बिहार का माल जाता है और अल्टीमेटली सस्ते फर्नीचर तक तो ठीक है, बट वो प्रोडक्ट अगर वो महंगे में बिक जाता है तो वो ब्रांड और हमारी इमेज खराब होती है. तो वी धीरे धीरे हम लोग अच्छी क्वालिटी में शिफ्ट होने लगे, एंड वी आर स्टार्टेड buying a good quality product from few of the factories, and we started trading that also. And then we thought ki when we have a huge demand of 10 factories or 5 factories, then why not we should set up a factory with all control of quality and doing everything in our brand name and all that. So in this way the factory was started in 1996, and the production came out in 1998. We put up a reasonably thick-thak factory, not a small factory, in Sonipat, having a capacity of 30 to 50 trucks. I can say 30 trucks a month, but because at that time they think 30 trucks is the capacity, but when I joined, I find it out the same factory can produce 50 trucks if it will be running in an efficiency level of 100%, which I don't think till now 99% of the factory people don't know what is the efficiency. The same machine can produce 10 trucks, and the same machine can produce 5 trucks, and people are happy with 5 trucks. So that is a different story of production. But we were never again running behind the production. We always see of the quality, and quality with the production, definitely, because that helps in reducing our cost and giving a fair price to our customers. So in this way, Nikhil, as I told you, the factory got started in 1998. I just मैंने ग्रेजुएशन फिनिश करके मैंने फटाफट ज्वाइन कर लिया था, बिकॉज माई फादर वॉज अ ग्रेट सेल्समैन. He was in the sales, and he liked that portfolio, so he needed someone to look after the production. So I developed myself. I got educated with my staffs, my seniors, my production managers, my GM. Everyone gave me the education. I worked from the lowest level to the highest level in the factory. Then one day, after 6 months of training, I got to know everything, and I started handling everything from purchases to manufacturing. And then after three or 2 years, my elder brother came in the picture, and now he wanted to do his own startup because he never wanted to go into the job. But then we offered our platform to him, and my dad was looking after the Delhi sales, and Harish joined us. He said, I will look the rest of India. You do whatever you want to do in Delhi, but let's give me rest of India. And he started selling our product in his way, in another more better quality, and more then the Naturo, and actually it was an old brand was Jay Assam, which my dad used to do, and then we have another brand called Naturo. It came into existence. He took this brand and he started there, I think in 2000 he started, and from 2000 now it's 2024, we are into it. We added many hot presses, but we never, actually our competitors and our fellow friends have 10 hot press, 6 hot press, 5 hot press. Hot press means the production, but we never run towards the hot press. We always try to get the 100% efficiency, and the 100% efficiency workers who are fully devoted with you, who are attached with your quality, who shares the same emotion and the pride for the quality and for the factory. So we always create a family in the factory, and our all products are made with love and affection, because none of our workers are exploited. They are given the best facilities, the best amount, the best rupees, the best salary, and the unlimited fund, whatever they need for their family, the help and everything, because we always treat them as a family. So our product is full of goodness, no blood, no harassment, no abuse language in our factory is tolerated. If somebody drinks alcohol, he's out of our factory, and many our GMs and production managers have been kicked out because of that.
So I totally believe the name Jai Balaji factory is like a mandir, and it is maintained till now like that. It is like a mandir. Yes, So thank you for the very inspiring story of Jai Balaji, Naturo Industries, and Jai Assam. So I was actually very curious because I know कि North India में the name Jai Assam is very famous, and South India में I think Naturo Natural. Industries, Yeah, Naturo because came of to the same be reason I told you, very famous Harish worked on it. because when Harish took over, he spread Naturo, the name of Naturo in South India as well, and North India mein Jai Assam was already prominent. So I think both names worked their magic, and we had a solid market. Yes. Yes. So I love the story, and especially the hot press machine and how we can optimize it. I think production of scale is one of the major issues that most companies face today, and it's crazy how back in the year 2000, Vikramji managed to succeed in calculating the most efficient way of producing plywood back in that time. And I really like the part where you elaborated more on how we shifted from just selling a product to selling a brand, and how we shifted from a low quality to a high quality product, because that was a big leap in establishing our image in the market. So thank you for that information, and I'm sure people would love to know this. Um, so, going forward towards the product line of Naturo today, Naturo is obviously known for plywood, but it's also known for a lot of innovative products that we brought to the industry from time to time. So, can you tell us more about some of the key products and their unique features that Actually, was in the market? the day when we started with our main key product, we know that we never go in the competition. In fact, Harish never sold the product in the competition. He always sell the product in a higher price. So our competitors have no weapons left because they are defeated by a sale. Like a salesman is selling a product higher pricer than what they are offering, but the shopkeeper is buying from us, not from them, in a cheaper price also. So the key product for that reason was two things. One is the quality, 100% guarantee of each piece, every piece in the truck. We assure 100% guarantee of the quality, and if they found anything wrong, we are always ready to return it back. And the another key factor was the innovation. We were always, till now, we are always ahead of innovations. Our competitors always copy our price list, our product range, our style of selling, and even the product also what we develop. So we always try, and we have a bent of mind like that from the day one. Like we have to give something extra to the customer in the same market price, or a little bit higher to the market price, because the cost also increases when you give something extra. We were the first person to introduce commercial plywood as a, you can say, CWR, cold water resistance, and we started dipping on that product. Now it is very common, but earlier we were the first one to introduce that, and it sold actually. And the same way, we have so many innovative products still now with in our price list, in our product range. It's all here. Like we were the first person to increase the layer in the plywood. Nowadays we are making 19 millimeter in 15 layers, which is very uncommon. Most of the factory make in 13 layers. We give extra layer for extra strength. The board are manufactured in 7 layers. The market is in 5 layers. The traditional approach is there that we have a product. We all our product. We say to the customer, why you buy our product? We have the question in our mind. What is the extra in it? So we always keep that extra factor in the product. If it is a door, it is with a 3, 3, 6, 7, 8, 9 layers door, which is the highest in the market. We have this product, and we sell only doors in 9 layers. So this is the extra. Then everybody started 9 layers in door. Then we started double frame doors. All our doors are with double the frames. So the product is always extra. We always wanted to extra. Same with the plywood. I told you it is with the extra layer.
We were the first person to introduce 6 millimeter in 9 layers, which is still nobody has achieved it. And we make the product 100% eucalyptus, which is also very difficult. And the earlier I was talking about the efficiency, I learned from my seniors, some of my, uh, I don't want to mention the name, but I meet with many other factory GMs who are very old and they belong to National, Kate Duro. They educated me what is efficiency. I just tell you, like we are in the decorative from the day one, from 1998, we are producing decorative. So we know how to handle the plywood, because decorative is a very sensitive thing, and the adhesive, the quality and everything has to be very fine. So I always, Harish pushed me to travel to China, to Vietnam, to Germany. I went to Germany. I bought few machines at that time when nobody think about to buy that, because they were very costly. So we never buy expensive cars, but we buy expensive machines for getting expensive results. So at that time I got to know, like, a machine. Just for example, I tell you, one machine produces one machine, that is a press, is having 10 delights, and in 10 delight you can make 20 sheets of decorative, because you use both the sides for pasting it. But a decorative is made in 3 minutes. 3 plus 2 minutes, you can say 5 minutes. So we calculate the efficiency of the machine by like this: if in 1 hour this machine can make one load in 5 minutes, then how many loads should be made in an hour? So it comes out to be 12 loads. 12 loads means 20 sheets into 12 is 240 sheets. If I say this, any factory person will be saying you are going crazy about it, how it is possible. But believe me, this is the 100% efficiency level. Now where we are, everybody is in, most of the industry is in 50-60% efficiency. But believe me, I every day produce 200 sheets. We have a benchmark of 85-90% efficiency, and we have a reward system if we cross 90% efficiency to every employee of the company. So we always achieve 80-90% efficiency. So this is what is production game. Many factory people produce in 3 hot presses, which I produce in 1 hot press. From 2000 we did that. So it was a massive revolution in the plywood. Nowadays people are going to understand that thing. So that is a different story. But I was talking about the product. So we have many products, many new range. If I tell you the current scenario, we are looking towards the recycled ply, which is very, very important for the industry, because the wood, the eucalyptus, the poplar, though they are an agricultural crop, but they are not in plenty. Every day the price is rising, the availability is very low, the quality is deteriorating. So now the industry is in the need to find an alternate, and we have to do it, and everyone has to do it. So we have founded a new product. We have set up another factory in Pune with a new innovation of plywood. We have just started panels made out of Tetra Pak, recycled Tetra Pak waste, which we are just have launched this product. So this is all the waste you can see, and they are made in the plywood of 12 millimeter, 18 millimeter. They are really very steady, very strong as like plywood. But we are not leaving plywood. We are continuing our plywood range, but the industry needed. The plywood is already taken over by HDHMR, which I don't think is a good alternate for the plywood. The huge amount of wood is consumed in that also, and I already told you wood is not in plenty. But HDHMR has comes in the existence because plywood is facing really problem of good quality wood, which HDHMR didn't need it. HDHMR can be made with any kind of wood, because they have to chip it and make powder and then mix it with the adhesive and can be made like a mold. So I found this product to be more better than a solution than a HDHMR, than a plywood,
एंड वी आर स्टिल डूइंग द प्लाईवुड बिकॉज प्लाईवुड हैज़ इट्स ओन पर्पस. प्लाईवुड की जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ प्लाईवुड लगना चाहिए. जहाँ पे हम प्लाईवुड को बदल सकते हैं वहाँ हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स को, जो कचरा हम बना रहे हैं उसको हम ही को उठाना चाहिए, हम ही को यूज़ करना चाहिए, ना कि हमें धरती माता को दे देना चाहिए कि उसको वो संभाले. उसे हमें ही संभालना चाहिए. तो विद दैट थॉट आई टोल्ड यू, हम लोग आगे हमेशा आगे आगे सोचते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं. कुछ फेल भी होते हैं, कुछ सक्सेस भी होते हैं, लेकिन हमारी R&D बहुत अच्छी है. जनरली फेल बहुत कम हुए हैं आज तक, क्योंकि हम काफ़ी दूर तक एक टेक्निकल एस्पेक्ट से, प्रैक्टिकल नॉलेज से देख के समझ के ही प्रोडक्ट में हाथ डालते हैं. तो ये प्रोडक्ट प्लाईवुड से सस्ता है, प्लाईवुड से अच्छा है, प्लाईवुड का अल्टरनेट है. ये हमारा लेटेस्ट इनोवेटेड प्रोडक्ट है जिसको हम मार्केट कर रहे हैं. और इसके अलावा जो नॉर्मल बोर्ड, डोर्स, प्लाईवुड, डेकोरेटिव, वो सब कुछ एज इट इज़ है विद द फाइनेस्ट क्वालिटी. और इसको मैं एंड करूँगा सिर्फ एक एग्जांपल देके, निखिल जी. मेरे कई सारे डीलर्स हैं जो मेरे से सिर्फ डेकोरेटिव लेते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि डेकोरेटिव अगर प्लाईवुड अगर 100 फैक्ट्रीज बना रही हैं तो डेकोरेटिव 20 ही बनाती हैं. 80 के बस की बात नहीं है. द डेकोरेटिव नॉट cup of tea of their product because of the quality first, the amount involved in it, the credits, the range. तो 100 में 20 बना पाती हैं, और 20 में भी हम हैं जो कि हम भी बनाते हैं उनमें से. तो अब मेरे बहुत सारे डीलर्स हैं जो मेरे सिर्फ डेकोरेटिव डीलर्स हैं, वो मेरे से प्लाईवुड नहीं लेते. वो कहते हैं सर आपका प्लाईवुड बहुत महंगा है, आपका डेकोरेटिव का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और प्राइस भी बहुत अच्छी है, बाजार से मैच करती है, बट प्लाईवुड जो हमारे पास ऑल्टरनेट है, ऑप्शन हैं सस्ते के, तो वो मेरे से प्लाईवुड नहीं लेती. हम भी कहते हैं कोई बात नहीं, आप डेकोरेटिव लीजिए, हमारा तो जो है वही रहेगा, हम तो हटने नहीं वाले अपनी क्वालिटी से, हम हल्का माल बनाने नहीं वाले. बट जो सबसे आयरनी की बात है, हंसी की बात है, जब उनकी, मेरे किसी डीलर, जैसे मेरे डीलर हैं भिवानी में, उनकी सिस्टर के घर में रोहतक में प्लाईवुड लगना है, तो वो कभी भी अपने सस्ती वाली प्लाईवुड जो हमसे सस्ती पड़ती है वो नहीं मंगाते. वो मेरे को ट्रक ऑर्डर करते हैं. वो कभी मेन स्ट्रीम कंपनीज में नहीं जाएंगे, वो हमेशा आपके पास आएंगे. जी हाँ, वो मेरे से उनके घर में प्लाईवुड जाएगा, उनके सारे दरवाजे मेरे से लगेंगे, मेरी फैक्ट्री से. तो दिस इज द ट्रस्ट वी हैव अर्न्ड. और मैं आपको इससे भी अच्छा के एग्जांपल देता हूँ. मैं नाम नहीं ले सकता, जो कि आज के दिन यमुनानगर के टॉप 5 या 10 फैक्ट्रीज में आते हैं, जो कमर्शियल प्लाईवुड बहुत अच्छा बनाते हैं और क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी अच्छा है. लेकिन फिर भी अगर उन्हें डेकोरेटिव चाहिए तो वो मेरे से लेते हैं. अब वो डोर नहीं बनाते हैं उनके फैक्ट्री में, तो अगर उनको डोर चाहिए तो वो मेरे से मांगते हैं. तो दिस इज द ट्रस्ट इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, इन आवर नेबरहुड. हमारे फेलो फैक्ट्री वाले भी जानते हैं कि इनकी फैक्ट्री में कुछ गलत नहीं होता है, सिस्टम से माल बनता है, अच्छी क्वालिटी बनता है, भले वो प्राइस कोई भी हो. और जब घर की बात आ जाती है ना, अपने खाने की बात आ जाती है, अपने पहनने की बात आ जाती है, तो आदमी फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है. आपकी तबीयत खराब होगी तो आप त्रेहान से नीचे नहीं जाना चाहोगे. जब जान पे बनती है तो आदमी बोलता है मुझे तो बेस्ट डॉक्टर त्रेहान ही चाहिए, वेदांता ही जाना है. तो उसी तरह से जब कोई अपना घर बनाता है, नॉलेजेबल आदमी, तो हमारे पास ही आता है. तो दिस इज द थिंग. और ये हमने अर्न किया है इस 24 सालों में, और वही हम कैरी कर रहे हैं. वी आर नॉट बिहाइंड ह्यूज प्रोडक्शंस, बट वी आर बिहाइंड द क्वालिटी एंड डेफिनेटली द इनोवेशन. वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द इनोवेशन, क्योंकि हमें चीज़ों को पीछे छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि वो सारी ऑब्सलीट हो जाती हैं और हमें दिख रहा है कि वो आगे जाके दिक्कत करेंगी. लकड़ियाँ कम मिल रही हैं, अगर हम उसी पे प्रेशर करते रहेंगे तो क्या होगा, प्लाईवुड महंगा होता चला जाएगा और कंज्यूमर के पास सही अल्टरनेट नहीं पहुंचेगा. वो बहुत ज़रूरी है. और वो कौन पहुंचाएगा, वो उसकी जिम्मेवारी हमारी है. अगर हमारे विजन्स ही नहीं अच्छे हैं, हम पागल की तरह एक ही चीज़ के ऊपर बैठे तो कोई मतलब नहीं. तो वी हैव ऑल द प्रोडक्ट्स, बट वी ऑलवेज एजुकेट कि यहाँ पे आप वुड को वेस्ट करिए, लगाइए, यहाँ इसकी ज़रूरत है, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप टेट्रा पैक के कचरे को भी यूज़ कर सकते हैं. और ऐसे और भी बहुत कुछ आएंगे और काम भी चल रहा है. तो हमें आई थिंक सेंसिबली बिहेव करना चाहिए. और मेरे डीलर्स को भी सबसे यही कहना है कि आप लोग भी सेंसिबली बिहेव करिए. इस इंडस्ट्री को आप तभी ग्रो कर पाएंगे, आपकी दुकानदारी और 50 साल इसी तरह से चल पाएगी, व्हेन यू आर ऑल्सो ओपन माइंडेड. आप उसी लकड़ी, उसी, पहले सिल्लियों से दरवाजे बनते थे, फिर प्लाईवुड आया, सिल्लियाँ ख़त्म हो गई क्योंकि सिल्लियों से फॉरेस्ट कटते थे, फिर प्लाईवुड ने उस सिल्ली को ले लिया. दरवाजे हमारे 70 साल पुराने गांव में जाएंगे तो आप लक्कड़ के दरवाजे होते थे, फिर फ्लश डोर ने उसको टेक ओवर किया, लकड़ियाँ बची, फॉरेस्ट बचे. तो उसी तरह से ये सब कुछ एक
पूरा का पूरा फेज है। अगर आप भी उसकी तरह चलेंगे तो, नहीं तो आप आरा लगा के, जो पहले बैठे थे व्यापारी आज से 50 साल पहले, वो आरा ही पकड़ के बैठे रहते। उन्होंने आरा छोड़ा ना, वो प्लाईवुड पे आए ना, अब उन्हें प्लाईवुड से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये टाइम, हाई टाइम है। और बस यही है निखिल जी, इसी तरह से यही छोटी सी जर्नी है और इसी सोच से हम चल रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं, हमने 25 साल से अपनी सोच को बदला नहीं है, प्रोडक्ट जरूर बदल रहे हैं। नहीं, आपने बहुत ही क्रेजी स्टेटमेंट ड्रॉप करी कि जब अपना घर के बारे में बात आती है, देन वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते एंड वो आपका ही लेते हैं। बहुत ही क्रेजी स्टेटमेंट आपने ड्रॉप करी एंड में। एंड आई रियली लाइक कि आपने कैसे डिस्क्राइब किया प्रोडक्ट्स को, कि आपने एक्चुअली मेरे 2 क्वेश्चन एक साथ में आंसर कर दिया। आपने एक फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ आर वी इनोवेटिंग द इंडस्ट्री, एंड सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट मेक्स अस कंपेटिटिव। दोनों क्वेश्चंस आपने आंसर कर दिए। एंड द क्रेजी पार्ट इज कि most people don't know what the difference between layers is. So let me elaborate on this. जब आप कोई भी प्लाईवुड रिलेटेड प्रोडक्ट लेते हैं जिसके अंदर लेयर्स होती हैं, सो इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ थिकनेस, जिसमें इतनी ज्यादा लेयर्स उसमें कोई डाल सकता है, दैट डायरेक्टली कोरिलेट्स टू इट्स वेट एंड इट्स स्ट्रेंथ एंड इट्स स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी एज वेल। सो जब विक्रम जी ने बात करी कि वी पुश्ड एन एक्स्ट्रा 2 layers into our plywood, it means that we made our plywood 30% more heavier and better in screw holding. And even the more compressed it is, the more moisture resistant it is, the more termite resistant it is. And with this, I think काफी सारी companies आज भी boast करती हैं that they have boiling waterproof, they have this much of lifetime and stuff for plywood. But honestly, it all comes down to the people who actually have knowledge of the industry and how they sell it. Because the normal customer might not know it, but जो आपको बेच रहा है, जो dealer है, he knows, if he's a good dealer, he will definitely know which product is the best. And that's what we try to do, because as industry innovators, we try to educate the dealer so that they can educate you. And of course, through our YouTube now, we will try to educate you even more. नहीं, इवन हमारे प्रोडक्ट के ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छा स्टैंपिंग डेवलप कर रखा है। हम लोग स्टैंपिंग एक ब्रांड इमेज के लिए नहीं करते हैं, बिकॉज आपने जो बोला कि डीलर तो पहले से ही समझदार होते हैं, वो उस लाइन के होते हैं। बट अगर आप सोचिए, एक आईटी प्रोफेशनल जाके प्लाईवुड खरीद रहा है या डोर खरीद रहा है, हाउ ही विल गेट द नॉलेज? प्लाईवुड इतना ज़्यादा यूट्यूब में या गूगल पे अवेलेबल नहीं है उसका नॉलेज। तो वी ऑलवेज ट्राई इन आर स्टैंपिंग, व्हेन वी स्टैम्प आवर प्रोडक्ट to sell in the market, we try to educate the dealer, to the consumer, sorry। हमारे प्रोडक्ट पे बहुत कुछ लिखा होता है जो कि कोई भी पढ़ा लिखा, और हम ये भी देखते हैं कि कोई अनपढ़ भी हो तो वो पिक्चराइज वे में समझ जाए कि किसमें उसका फायदा है और किसमें नुकसान है और इसमें क्या है, जो दूसरे में है कि नहीं है वो पता कर ले एटलीस्ट, कि मैंने ये चीज़ यहाँ देखा था, ये चीज़ दूसरे में भी है कि नहीं है, क्योंकि उस दूसरे पे वो मार्क नहीं है, क्या पता उसमें हो, वी कैन ऑलवेज आस्क। तो हमारा हमेशा ये रहता है, क्योंकि हम जब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हम चाहते हैं कि सामने वाले को हमारी क्वालिटी के बारे में पता हो, और ही कैन ऑलवेज इंक्वायर एंड ट्राई ऑल्सो। तो ये एक थॉट प्रोसेस रहता है हमारा, जो कि इस तरह से चलता है। एंड आपने एक HDMR, आई थिंक HDMR के बारे में बात करी, हाई डेंसिटी मॉइस्चर रेजिस्टेंट। सो आई वांट टू नो कि आपको क्यों लगता है कि ये प्लाईवुड को रिप्लेस किया है HDMR ने? बिकॉज देखिए, हम आपको बताएं, हम HDHMR के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। HDHMR में कुछ अच्छाइयाँ हैं और बहुत सारी बुराइयाँ हैं, और हमने HDHMR की अच्छाइयाँ लेने की कोशिश करी है, क्योंकि प्रोडक्ट में जो अच्छी चीज़ें हैं वो लेनी चाहिए, आँख मीच के क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना चाहिए। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो हमने HDHMR की एक अपनी प्लाईवुड बनाई है, क्योंकि प्लाईवुड उतना स्मूथ नहीं होता है जितना HDHMR होता है। तो वो एक नीड होती है कोई भी काम में, हाई ग्लॉस पेंट में या कई पर्पस में ऐसी ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय हमें HDHMR की ये अच्छाई लेनी चाहिए। तो HDHMR की अच्छाई हम ले लेते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको अपने प्लाईवुड के ऊपर, हम अपनी प्लाईवुड को, जैसे 18 mm की प्लाईवुड है जो कि फर्नीचर बनाने में, बॉक्स बनाने में, कारकेस बनाने में यूज़ होती है, तो हम उसको अपनी प्लाईवुड को 16 मिलीमीटर थिक कर देते हैं, और उसके ऊपर हम HDHMR
कि प्लाईवुड को लगा देते हैं, वो भी हम अपने अच्छे एडेसिव से, जिस एडेसिव से हम अपने प्लाईवुड को बनाते हैं, और फिर हम उसको दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि HDHMR की जो हम अपने प्लाईवुड को बनाते हैं और फिर हम उसको दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि HDHMR की जो तकलीफें हैं, जो कि स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी उसकी डेफिनेटली प्लाईवुड से तो कम ही होगी। किसी भी आप लेमैन से भी पूछेंगे, एक अनएजुकेटेड कारपेंटर भी ये बात बता सकता है। उसका हल्का है वो, तो ऑब्वियसली उसकी जी हाँ, तो वो चीज़ उसको प्लाईवुड का फायदा मिल गया और HDHMR का सरफेस मिल गया, तो इट सॉल्व द पर्पस। तो इसमें भी हम लोग अब जैसे लैमिनेट लगाना है, प्लाईवुड के ऊपर लगाएंगे, उसकी एक फिनिश आएगी, डेफिनेटली आएगी, बट आजकल लैमिनेट के थिकनेसेस भी इतने पतले हो गए हैं, कंपटीशन इतना हाई हो गया है, लोग चाहते हैं कि आप पतला सा पेपर ही लगा दीजिए और सस्ता दे दीजिए, तो उस देन द HDHMR हैव द सॉल्यूशन फॉर इट। सो वी ऑल्सो थॉट कि वाई टू लूज दैट मार्केट, एंड इसकी कोई अच्छाइयाँ हैं तो उसे हमें ले लेनी चाहिए। तो हमने HDHMR पे लैमिनेट करके प्लाईवुड दिया है, प्लाईवुड पे भी हमने लैमिनेट करके सरमाइका लगा के हम सॉल्यूशंस दे रहे हैं, और वी आर द ओनली वन हु आर डूइंग इट सक्सेसफुली इन द मार्केट। मैनी पीपल हैव ट्राइड इट, बट कोई भी इसमें सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि प्लाईवुड बेंड हो जाता है सरमाइका लगने के बाद। बट हमने जिस तरह से किया है, एक सही प्रोसेस से, एक सही कॉस्ट हम उसका लेते हैं, अगर आप उतना कॉस्ट देंगे तो आपको प्रोडक्ट भी सही मिलेगा। तो वी आर डूइंग द प्लाईवुड विद HDHMR कॉम्बिनेशन, एंड सो आपने एक हाइब्रिड प्रोडक्ट क्रिएट किया है, exactly. and I believe that this is a success because we have achieved it. We have हमने काफी लॉस किया है इसके अंदर, इसको सक्सेस करने में, बट now the product is ready and we are selling it from last 2 years. We don't have any problem. It's very nice product. No, actually I feel like इसका सक्सेस के पीछे एक और रीजन है, and that is कि we are selling a ready-made product. पहले हम एक प्लाईवुड सेल कर रहे थे, एंड उस पे अल्टीमेटली कारपेंटर को माइका चिपकानी पड़ रही थी। मार्केट, वो लोगों के पास पहले फुर्सत बहुत था, लेकिन अब आज के लोग बोलते हैं कि काम धीरे मत करो। पहले बोलते थे काम धीरे करो, अच्छे से करो। अब टाइम की इतनी वैल्यू हो गई टाइम इज मनी। अब फैक्ट्री से डायरेक्ट जी हाँ, जो निकाल के इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि ये ड्राइवर को फोन कर दो, मम्मी घर आ गई, आप आ जाइए, वो कट हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। तो इसीलिए ये इसकी ज़रूरत थी और ये करना ही पड़ा, सबको करना पड़ा। HDHMR एग्जिस्टेंस में आ गया और अब प्लाईवुड को वो जगह वापस से लेनी पड़ेगी HDHMR से, क्योंकि HDHMR की जो खामियां हैं वो प्लाईवुड में है, और जो HDHMR में अच्छाइयाँ हैं वो प्लाईवुड उसको अडॉप्ट कर रहा है। हम लोग जैसे लोग इनोवेट कर रहे हैं। टेक्निकली HDHMR प्लाईवुड दोबारा मतलब मार्केट में आ रहा है HDHMR के थ्रू भी। सर कोई ऑप्शन नहीं था ना, HDHMR ने उस वैक्यूम को ले लिया, क्योंकि प्लाईवुड के पास वो ऑप्शन नहीं था, जो कि वो ले गया सनमाइका चिपका करके। HDHMR कोई सस्ती थोड़ी ना, प्लाईवुड से महंगी पड़ रही है वो, लेकिन फिर भी वही बात, जैसे नेचुरो ने महंगा होते हुए भी वो बाजार ले गया। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट राइट था, इसीलिए वो बाजार ले गया। तो HDHMR का प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट राइट था, वो लैमिनेट लगा करके इवन थिकनेस में वो दे रहे हैं। तो अब हम लोग आ रहे हैं, खैर हम तो बहुत टाइम से कर रहे थे ये चीज़, बट एक अकेले आदमी के करने से नहीं होता जब तक 10 फैक्ट्री वाले नहीं करें। तो अब सब लोग कैलिब्रेटेड प्लाईवुड बना रहे हैं, और लैमिनेट तो खैर खाली हम ही लगा के दे पा रहे हैं, हर फैक्ट्री वाला अभी नहीं वो ला पाया है एक्यूरेसी, बट स्टिल आई बिलीव जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा हाथ जुड़ेंगे, तो वी विल डेफिनेटली टेक बैक द शेयर फ्रॉम द मार्केट ऑफ HDHMR। और HDHMR की जहाँ पे ज़रूरत है, मेरा यही मानना है कि HDHMR को 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। वो अल्टीमेटली एक इन्फीरियर चीप फर्नीचर ही बन सकता है HDHMR से, चाहे वो कितना भी हाई डेंसिटी हो। बुरादा बुरादा ही रहेगा, लकड़ी लकड़ी रहेगी, लकड़ी एक नेचुरल चीज़ है। सो दिस इज लाइक दैट। So is this a direct attack on WPC, PVC and all these combinations, या सिर्फ बुरादा आप नहीं, वो तो और भी ज़्यादा खराब है। वो और भी ज़्यादा खराब है, वो तो प्लास्टिक है, वो तो और भी ज़्यादा खराब है। ओके, दे आर पॉलीमर्स, दे आर नथिंग। ओके, लकड़ी फर्नीचर को आप हमेशा एक नेचुरल प्रोडक्ट की तरह से देखते हैं, एक डेड नहीं चीज़ मानते हैं। आपके घर में दरवाज़ा है, फर्नीचर है, वो सब जिंदा लगता है, एक प्लांट की तरह लगता है। जैसे आपके घर में गमले आप क्यों लगाते हैं, आप घर में डॉग क्यों रखते हैं, वो नेचुरल, वो सब एक नेचर है। अगर आप फिर तो आप स्टील के दरवाजे लगा लीजिए ना। आप अगर प्लास्टिक का ही कुछ लगाना चाहते हैं तो आप वाई नॉट यू मेक स्टील डोर और आयरन डोर, जो पहले चलते भी थे लोहे के दरवाजे। ये सब तो वही प्रोडक्ट है, इनकी कोई लाइफ नहीं है, इनका अंदर कोई फील नहीं है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं ये। जिसे वुड का टेक्सचर पसंद है वो वुड ही लेगा, उसे और कोई चीज़ में उसके वजह से बचेगी नहीं।
तो Right. आई थिंक दैट्स एनफ। और आप बताएं बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हो नहीं तो, नहीं, वरना आपने I think you've answered our questions beautifully, and thank you so much for sharing your incredible journey and vision of Naturo Industries. कोई आपको फाइनल चीजें बोलनी हो तो आप बोल नहीं सकते हैं. नहीं, आई डेफिनेटली लुक टुवर्ड्स, हम कभी भी कोई मोनोपोली नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं सारे लोग हमसे मिले, बात करें और चीज़ों को, इंडस्ट्री को एज अ ग्रो करें, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी ह्यूज मार्केट। एंड जो मोदी जी कर रहे हैं, जो हमें बचा रहे हैं बाहर के इम्पोर्ट से और देश के चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम वो इन्फीरियर हल्की क्वालिटी, हमारे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, हर आदमी आज के दिन क्वालिटी की तरफ जा रहा है, गांव वाला हो चाहे शहर वाला हो। तो हमें अल्टीमेटली इन सब चीज़ों को समझते हुए अच्छे बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स पे, आज यूएस है, उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, हर कंट्री उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कंट्री ने एक स्टैंडर्ड्स बना दिया है। अब इंडिया बीआईएस पे आ रहा है, वो इम्पोर्ट नहीं करने दे रहा है, कोई भी हल्का माल इंडिया घुसने ही नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने बीआईएस लगा दिया है लगभग सारे प्रोडक्ट्स पे। तो इट इज़ अ नीड, इट इज़ अ नीड नाउ। अब हमें अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जाना है तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब हमें मतलब रेंज रोवर क्वालिटी की गाड़ियां बनानी पड़ेंगी, तो उसी तरह से प्लाईवुड को भी अप्रेज होना पड़ेगा और सारी इंडस्ट्रीज को होना पड़ेगा। तो मेरा यही कहना है कि नए नए प्रोडक्ट्स को, इनोवेटिव चीज़ों को लाइए। और बहुत घर बनने हैं, बहुत बिल्डिंग्स बननी है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अर्बनाइजेशन बहुत होना है, मैसिव डिमांड आने वाली है और है भी। और उसको मीट करने के लिए एक सही सॉल्यूशन होना चाहिए, ग्रीन सॉल्यूशंस होने चाहिए। सो दैट्स इट। चलो, थैंक यू सो मच. Yeah.